Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn English with Us. Today we are going to do the chapter that is unit number 3, Quaid-A-Great Leader. This is from the book textbook of English from class 9th, and in this very lecture we are going to do the chapter's explanation with translation. And before starting, it's a request to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. So without wasting our time, let's get started. It's on page number 24. So it's page number 25 and there's pre-reading. 2 questions are here. Number 1 is who do you think a leader is? So who do you think a leader is? A leader is a person who leads you in each and every situation, whether it's a good situation or bad situation. The person who guides you, who leads you in each and every situation the best. And the second question is, why do you think Quaid-e-Azam is a great leader? So of course, without any doubt, he is a great leader because he did a lot for the sake of our country. He was the person who made us people we got this country, we got this homeland, and we got our homeland because of him. So it's just one personality, that was Quaid-e-Azam, and that's why he was a great leader. He did not put himself in front of anything. Like, he was a person who sacrificed a lot, who compromised a lot, and he did a lot for the sake of the betterment of the country. So let's start the reading. Page number 25. You must have your pencils and your pens with your hands, because you have to underline the important MCQs according to the board pattern. So it was August 7th, 1947, when a silver aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi. It was watched by a vast, excited crowd while smoothly landing. It was August 7th. 1947, when a silver aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi. 7 अगस्त 1947 का दिन था जब a silver aircraft circled over the airport at Maripur, Karachi. जब एक सिल्वर को कहेंगे चांदी का, ठीक है, एक सफ़ेद रंग का जहाज़ घूमा ओवर द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पे, एट मारीपुर, कराची के हवाई अड्डे पे. 7 अगस्त 1947 के दिन एक सफ़ेद रंग का जहाज़ मारीपुर, कराची के हवाई अड्डे पर घूमा. इट वॉज वॉच्ड बाय अ वास्ट एक्साइटेड क्राउड वाइल स्मूथली लैंडिंग. ये देखा गया एक बहुत वसी पुरजोश हुजूम ने, वाइल स्मूथली लैंडिंग, जबकि वो बहुत ही आराम से उतर रहा था. वो जहाज़ बहुत ही वसी पुरजोश हुजूम ने देखा, जबकि वो बहुत ही आराम से उतर रहा था. So in the very first line there is an important MCQs, that is what was the date? That was 7th August 1947. This is important MCQs, underline it please. First to step out of the aeroplane was a tall and dignified man wearing a pure white sherwani. First to step out of the aeroplane, सबसे पहले जहाज़ से जिसने बाहर कदम रखा, was a tall, एक कदावर, and dignified और पुरवकार man, इन शख्स था, wearing, जिसने पहन रखी थी, a pure white sherwani, एक सफ़ेद रंग की शेरवानी. सबसे पहले जहाज़ से जिसने बाहर कदम रखा एक कदावर, एक लंबा और पुरवकार शख्स था जिसने सफ़ेद रंग की शेरवानी पहन रखी थी. As soon as he appeared, जैसे ही वो सामने ज़ाहिर हुए, नमूदार हुए, the whole crowd roared with one voice. सारा का सारा हुजूम चिल्लाया या नारा लगाया. You can see here the word roared is used. That is a word which is used for the line, okay? But here, in order to make this text more appealing, the writer has used the word roared, because roared, that makes you people feel like the crowd they shouted in a very loud voice. So roared word is that is a synonym of shouted here, okay?
सो जैसे ही वो सामने ज़ाहिर हुए, जैसे ही वो नज़र आए, द होल क्राउड रोड, सारा का सारा हजूम, उसने शोर किया, उसने नारा लगाया विद वन वॉइस, एक आवाज़ में, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। एंड एवरी वन, और हर एक, पुश्ड फॉरवर्ड, और हर एक शख्स ने एक दूसरे को आगे की तरफ धकेला, टू वेलकम हिम, ताकि उसको खुशामदीद कह सकें, टू गेट एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सी हिम क्लियरली, ताकि उससे जितना नज़दीक हो सके, जितना मुमकिन हो उनके नज़दीक आना, ताकि वो उनको सही तरीके से, क्लियरली मीन्स सही तरीके से उनको देख सकें। फॉर हेयर वॉज देयर ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म, द फाउंडर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ देयर न्यू कंट्री। फॉर हियर, यहाँ पे उनका बहुत अजीम रहनुमा थे कायद-ए-आज़म, जो कि बानी और जो कि पाकिस्तान, इस नए बनी हुई मुल्क के बानी और पहले गवर्नर जनरल थे। Here was their leader who had won पाकिस्तान for them, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर उनका वो रहनुमा था, लीडर, वहाँ पर उनका वो रहनुमा था जिसने, जो उनके लिए पाकिस्तान को जीत चुका था, ठीक है, फॉर देम, उनके लिए, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। So in the very first line you can see there was an important MCQ, that was August 7, 1947. What was the color of the aircraft? That was silver. And what is the synonym of aircraft? That is aeroplane. Okay, synonym are the words which have same meanings, okay, and antonyms are the words which have opposite meanings. So aircraft and aeroplane, both of these are the synonyms. Okay, keep this thing in your mind, because now in SLO based exams you may be asked any question, any MCQs, so be ready for that. Okay, now let's move toward the next paragraph, that is, as he drove through the great sea of people that stretched from the airport to the city, through all the cheers and tears of joy and never-ending slogans of Pakistan Zindabad, the kite showed no signs of his feelings. So as he drove is a second form of drive. As he drove, जैसे ही वो आगे बढ़े, through the great sea of people, लोगों के बहुत ही बड़े हजूम से। Here you can say, instead of a lot of people, the writer has used here great sea of people. So people cannot be in the sea, in the form of sea. You can use the word crowd here, but you know that this is a type of literary text, and in this text you may find a lot of the words which have literal meaning, something like they are different from the deep meaning. So great sea of people, that means the people which were in the great crowd, in a huge crowd. Okay, so जैसे ही वो आगे बढ़े, लोगों के बहुत ही बड़े हजूम में से, लोगों के समंदर में से, that stretched from the airport to the city, जो कि फैला हुआ था, stretched means फैला हुआ था, from the airport to the city, हवाई अड्डे से शहर की तरफ, थ्रू ऑल द cheers and tears of joy and never ending slogans of पाकिस्तान जिंदाबाद, खुशी के उन नारों में से, और खुशी के उन आंसुओं में से, और कभी ना ख़त्म होने वाले नारों में से, स्लोगन्स मीन नारे, एंड नेवर एंडिंग स्लोगन्स ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद, और कभी ना ख़त्म होने वाले नारों में से जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के थे। द काइट शोड नो साइन ऑफ हिज फीलिंग्स, कायद-ए-आज़म ने अपने एहसासात का कोई भी इलामत ज़ाहिर नहीं की, कि उनकी एहसासात, उनकी जो फीलिंग्स थे, उनके कोई भी जो है वो इलामत, कोई भी निशान नज़र नहीं आया। ही रेयरली डिड सो, वो ऐसा बहुत कम करते थे, रेयरली इज़ एन एडवर्ब। ओके, ही रेयरली डिड सो, वो बहुत कम ऐसा करते थे। कैसा बहुत कम करते थे? ही नेवर एवर शोड हिज फीलिंग्स टू anyone. Okay, so next is, if he felt pride or joy in what he had done, he did not let anybody see it. अगर वो कभी इस बात पे फ़ख्र महसूस करते भी थे जो कि वो कर चुके थे, what he had done children, he had won the separate country for the people of the subcontinent who were Muslims, for us. Okay, so जो उन्होंने किया था वाकई में वो उस पर फ़ख्र कर सकते थे ना, लाइक इफ़ ही फेल्ट प्राइड और जॉय, अगर वो कभी फ़ख्र या कोई खुशी महसूस करते थे उस बात पे जो कि वो कर चुके थे। ही डिड नॉट लेट एनीबडी सी इट, उन्होंने कभी भी किसी शख्स को इसको नहीं देखने दिया, किसी को भी नहीं दिखाया। Through all the excitement of those first days in the life of the young nation, the man who had made it possible remained calm, serious and sober.
थ्रू ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ दोज फर्स्ट डेज, शुरू के उन पुरजोश दिनों में से, इन द लाइफ ऑफ द यंग नेशन, इस नौज़ायदा कौम के या इस नई बनी हुई कौम के उनकी ज़िंदगी में, द मैन हु हैड मेड इट पॉसिबल, वो शख्स जिसने इन सब को मुमकिन बनाया, रिमेन्ड काम, पुरसुकून रहे, सीरियस संजीदा रहे, एंड sober. Actually, sober and calm, these are the words which are for pursukoon, like these are the synonyms, okay, the words which are having same meanings, but you can also use the word here like pursukoon rahe ya phir kaim mizaj rahe. Perhaps he was thinking of the millions of the people who had become homeless when India and Pakistan became separate countries. Perhaps शायद के he was thinking of the millions of the people, शायद कि वो उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे who had become homeless, जो कि बेघर हो गए थे, when India and Pakistan, जबकि पाकिस्तान और इंडिया बना, जबकि पाकिस्तान और इंडिया अलग ममालिक बने, ठीक है, कि शायद कि वो उन लाखों लोगों के बारे में सोच रहे थे जो कि बेघर हो गए थे, पाकिस्तान और भारत जो है वो उन लोगों को अलग ममालिक बनते वक्त. So there is another important MCQ, that is through all the cheers and tears of joy. This is a phrasal verb that means like cheers and tears, like all your excitements, all the time when the tears come in your eyes because of the happiness. So through all the cheers and tears of joy and never ending slogans, like there's cheers and tears is a like phrase that means like all your excitements, like the time when you are happy because of a lot of things and the tears come in your eyes. This is used for that, so you must remember this phrasal verb, okay. Now let's move toward the next page, that is page number, I guess that is 26, and it's perhaps he was thinking of the thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. Perhaps शायद कि वो उन लाखों लोगों के बारे में, उन हज़ारों लोगों के बारे में सोच रहे थे जो कि हमला किया गया था जिन पे, और जिनको मारा गया था सड़कों पर और रेलवे पर, और रेलवे पर, और जबकि वो अपने घर वापस, अपने वतन वापस आने की कोशिश कर रहे थे. There was much in those days of violence to sadden Jinnah, who was a man of very strong feelings, although he rarely showed it. There was much in those days of violence, उन दिनों बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद था, टू सैडन जिना, जो कि जिना को गमगीन कर सकता था. वो इज़ अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो कि बहुत ही अपने पुख्ता एहसासात के मालिक थे. ऑल दो ही रियरली शोड इट, हत्ता कि उन्होंने बहुत कम दिखाया. वट डिड ही रियरली शो? He really showed his emotion, whatever the emotions were, whether the emotions were of happiness, whether the emotions were of sadness. He did not let anybody see the emotions concerned to his happiness and his sorrowness, okay. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. वो लोग, हत्ता कि वो लोग जो कि आज़ादी के दिन इनके पास थे, ठीक है, कुछ वक्त के लिए, कुछ लम्हों के लिए उन्होंने एक खुश आदमी देखा. Once he went to the balcony of the governor house from where he could see without being seen, and as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, he smiled. एक दफ़ा जबकि ये गवर्नर हाउस के बालाखाना के बरामदे में गए जहाँ से ये देखे जा सकते थे, फ्रॉम वेयर ही कुड बी सीन विदाउट बीइंग, फ्रॉम वेयर ही कुड सी, जहाँ से वो देख सकते थे, विदाउट बीइंग सीन, बगैर दिखाई दिए. लाइक दैट वाज द प्लेस फ्रॉम वेयर ही कुड सी each and every person but nobody could see him, so that was an area, okay. So जहाँ से ये देख सकते थे बगैर दिखाई दिए. And as he looked on the crowd, और जैसे ही इन्होंने हुजूम की तरफ देखा, still cheering in the streets outside, जो कि अभी भी बाहर गलियों में बहुत ज़्यादा खुश थे, he smiled, वो मुस्कुराए. In that smile, उनकी उस मुस्कुराहट में, could be seen the warm hearted man, एक बहुत ही नर्म मिजाज आदमी, बहुत ही नर्म दिल आदमी, behind the stern कायदे-आज़म, बहुत ही सख्त कायदे-आज़म के पीछे. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well. Now underline this, far from well, this is very important. Actually this is again a phrase and this phrase means ill. Far from well means
like he was tired and ill. Instead of ill, here the phrase is used for from well, that means ill. So Muhammad Ali Jinnah at this time tired and ill. So instead ill, you can write for from well. You must know, okay, underline it. So this phrase means ill, okay. मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे एंड फॉर फ्रॉम वेल और बीमार थे, बट ही हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन। लेकिन उनको इस बात का इत्मीनान था कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो हो चुका है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस वक्त बहुत थके हुए थे और बीमार थे। फॉर फ्रॉम वेल, दैट इज़ अ फ्रेज दैट मीन्स इल, बीमार थे, बट ही हैड द सेटिस्फेक्शन ऑफ नोइंग दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क वाज डन। लेकिन उनको इस बात का इत्मीनान था कि उनके काम का ज़्यादातर हिस्सा हो चुका है, बट द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क हैज़ बिन डन, वर्क वाज डन, कि उनके काम का सबसे बड़ा हिस्सा हो चुका है, एक बड़ा हिस्सा हो चुका है। नाउ टेल मी गर्ल्स दैट व्हाट वाज द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज वर्क, लाइक व्हाट वाज हिज वर्क एग्जैक्टली, दैट वाज टू अचीव अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स। सो बाय द फोर्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, उनके पुख्ता इरादों की वजह से, एंड लीडरशिप, a people who had once been a defeated group with little to hope for, in an empire ruled by a foreign power, had become the greatest of the Muslim states and the fifth largest nation in the world. उनके पुख्ता इरादों की ताकत की वजह से एंड लीडरशिप और उनकी रहनुमाई की वजह से, अ पीपल हु हैड वंस बीन अ डिफीटेड ग्रुप, वो लोग जो कि एक हारा हुआ ग्रुप थे, जो कि एक हारा हुआ ग्रुप रह चुके थे, विद लिटिल टू होप फॉर, जिनके पास बहुत ही थोड़ी सी उम्मीद थी, एंड इन एन एम्पायर रूल्ड बाय अ फॉरेन पावर, एक ऐसी एम्पायर मीन्स एक ऐसी सल्तनत में थे जो कि बाहर की ताकत जो उस पर हुक्मरानी कर रही थी। हैड बिकम द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, एक बहुत ही बड़ी इस्लामी रियासत बनी और दुनिया की पाँचवीं बड़ी कौम बनी। फिफ्थ लार्जेस्ट, अंडरलाइन इट, दिस इज important MCQs, okay. Here this phrase was very important for the MCQs, and now this fifth largest nation. So you may be asked this in your MCQs, okay. 70 million people who once had no country to call their own had become a nation with great ideals and a great faith. 70 million people, 7 crore log. In 1 million there are 10 lakhs, so exactly in 70 million there are like 700 lakhs, right? So 70 million, like 7 करोड़ लोग जो कि एक दफ़ा जिनके पास अपना मुल्क कहने के लिए कोई मुल्क नहीं था, हैड बिकम अ नेशन, एक कौम बन चुकी थी, विद ग्रेट आइडियल्स एंड अ ग्रेट फेथ, बहुत ही अच्छे ख़यालात के साथ और बहुत ही अच्छे अकीदे के साथ, बहुत ही अजीम ख़यालात और अकीदे के साथ। अ फ्यू डेज़ आफ्टर ही लैंडेड इन कराची, कुछ दिनों के बाद कराची उतरने के बाद, कराची आने के बाद, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टोल्ड हिज पीपल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लोगों से फरमाया, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप लोग आज़ाद हैं अपने मंदिरों पे जाने के लिए, ठीक है, मंदिर, द पीपल लाइक हिंदू पीपल दे यूज टू गो देयर फॉर देयर वर्शिप। आप लोग आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और इस रियासत, पाकिस्तान की रियासत में किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट, आप किसी भी मजहब और किसी भी ज़ात पात से ताल्लुक़ रखते हो। वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट, हम सब एक रियासत के बराबर शहरी हैं। He was of course reminding them of the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम teaching, बग़ैर किसी शक के वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दोहरा रहे थे, that all the men are equal in the eyes of Allah, कि तमाम लोग अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं, कि तमाम लोग अल्लाह ताला की नज़र में बराबर हैं। So this was all about this chapter, and this quotation is very important. You need to quote this quotation in your question if you will be asked about this, like what was the statement, what was the address which Quaid-e-Azam addressed to his people at the time when he landed to Karachi. So girls, this was all about this unit. Inshallah we will do next unit translation and explanation. If you like this lecture, do not forget to press like button and also share this with others. Thank you. Allah Hafiz.